Imagine getting gift of life, but living it under the shadows of beating, with constant feeling of being unwanted, holding relinquished desire to have an identity. Imagine life of a woman who gives life but struggles to live one. Women all over the world have been subjected to different forms of violence, emotionally, psychologically, verbally, physically, and financially. It leaves us wondering, is being a woman such a misfortune? Will this story ever get a happy ending? Or the melancholic tale of gender inequality will continue to haunt more than half of the population? हम सब बहनों की शादी छोटी उम्र में की थी, पर हम सब बहनों के किसी ने राय नहीं दिया कि लड़कियों से पूछे इसकी शादी करे या ना करे। पहले तो शौहर मारता था, कहता था पैसे लेके आओ, अपने मायके से पैसे लेके आओ। हम तो इतने पैसे नहीं थे तो उसे दे। यहाँ पर जो है ना अर्ली मैरिज जो सिस्टम जो है वो ज़्यादा था, बच्चों को तालीम नहीं दी जाती थी, मारपीट का भी जो है सिलसिला जो है यहाँ पर था, और बहुत सी जो है ना औरतों के साथ जो है मसाइल पेश आते थे। पहले भी हम औरत की बात करें, जब बेटी पैदा होती थी तो उसको जो है मार दिया जाता था। आज भी ये कल्चर चला आ रहा है। To tackle challenges of gender inequality, Norwegian Church Aid, along with its implementing partners, Civil Society Support Program and Rosen, developed an indigenous strategy and design promoting gender justice by engaging men and boys to reduce gender-based violence program under Church of Sweden's cooperation agreements funding for women empowerment. The major focus of the project is to reduce gender inequalities and violence against women, engage men and boys for gender justice, economic empowerment of women. This project is implemented in Mirpur Khas district of Sindh province through implementing partner Civil Society Support Program and in Rawalpindi and Islamabad through implementing partner Rosen. सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम का जो मिशन है वो एक सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करना, स्ट्रेंथनिंग करना, जिससे हम जो ऑर्गेनाइज कम्युनिटी कर सकें, एजुकेट कर सकें, इंगेज और एम्पावर कम्युनिटी कर सकें। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए CSSP और NCA ये काम कर रहे हैं, तो हमने डिपार्टमेंट ने चाहा कि इनके साथ कोलैबोरेशंस करें और इनकी फुली तरीके से इनकी मदद करें। As per the program's ideology, the first chapter focused on combating gender-based violence. In this regard, diverse set of advocacy and awareness-raising activities were implemented. As the first step, Citizen Support Group was activated to provide a common platform to social, political, religious, human rights activists, lawmakers, and media personnel to advocate for effective implementation of pro-women laws. Women Leader Forum was formed that brought together district administration, line departments, provincial ministries, legislators, and provincial commission. 15 points charter of demand on status of women and human rights commission was developed and shared with lawmaking and implementing bodies. For the first time in history of Mirpur Khas, support was extended to provincial government for developing rules of business of Hindu Marriage Act. Parallel to these, trainings were organized for community members as well as stakeholders on combating gender-based violence. Women complaint cells were supported for improved facilitation towards addressing cases of gender-based violence. CSSP का सबसे बड़ा रोल ये रहा है, तो पहले वुमेन इंचार्ज और स्टाफ पूरा इकट्ठा बैठता था, उसमें औरतों को किसी मसले बताने में शर्म आती थी। उन्होंने एक अलग कैबिन बना के दिया है। औरतों के हकूक़ के बारे में जो तफसीली कानून बनाए गए हैं, उनके बारे में तफसील से हमें बस बताया गया है और ट्रेनिंग दी गई है। मेरी कम उम्र में शादी हुई, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, सबको संभालना, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। वाइफ को काफ़ी बार मैंने डांटा भी है और 1-2 बार मारा भी है। CSSP वाले एक बार आए, दूसरी बार भी आए, उनके साथ जब मीटिंग में बैठते थे, सेशन उनके होते थे, फिर मुझे काफ़ी एहसास होने लगा कि मैं काफ़ी गलत हूँ। अगर हम लड़ाई झगड़ा करते थे तो गुस्सा करते थे, बच्चे देखते थे, लेकिन अब सारे मिल के खुशी से रहते हैं, लेकिन बच्चों को भी हम बड़ा प्यार देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी से बचपन में इनको अच्छा इंसान बनना सिखाऊं।
जो अब अभी सेशंस दे रहे हैं, जो लिंकेजेस बिल्ड कर रहे हैं हम इन कम्युनिटीज़ के साथ, ये शुरू में तो बहुत ही चैलेंजेबल था, लेकिन हमने 2 सालों में देखा है कि इनकी काफ़ी बिहेवियर चेंज हो चुके हैं। अब ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी औरतें हुनरमंद हों, कोई बिज़नेस करें, कुछ काम करें। और जब तक बिहेव इनका चेंज हो जाएगा, इनके नस्ल दर नस्ल फिर ये जो वायलेंस है, इस तरह की चीज़ें, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। Living in a patriarchal society, owing to various socio-cultural norms and practices, men get many privileges that women can never think about. Gender justice cannot be achieved until men and young boys are willing to work towards bridging the gap. Therefore, the second chapter of the program aimed towards reducing gender inequality, focused on men and young boys. वायलेंस एक ऐसा अमल है जिससे सिर्फ ख़वातीन ही मुतासर नहीं होते बल्कि मर्द भी मुतासर होते हैं। ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो यंग बॉयज़ एंड मैन रहा, और उसके अंदर हम लोग उनके साथ सेंसिटाइजेशन सेशंस करते हैं सो दैट दे स्टार्ट रियलाइजिंग देयर फ्रॉम दिस सेल्फ, कि उनके अपने अंदर ऐसे एटीट्यूड मौजूद हैं अगर तो जो वायलेंस प्रोन हैं, जो वायलेंस की तरफ उनको लेके जाते हैं, और तो वो उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, और फिर इसके साथ साथ जहाँ जहाँ उनको वायलेंस होता हुआ नज़र आता है वो उसको भी हाईलाइट करें। मैं ये सोचता था कि ख़वातीन को सिर्फ घर में रहना चाहिए, ज़्यादा उनका बाहर नहीं होना चाहिए, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह में ख़वातीन का कम हिस्सा होना चाहिए, और ख़वातीन ज़्यादा इख्तियारात ख़वातीन के पास नहीं होना चाहिए, बस उनका काम ये है कि घर में रहें। हमारे साथ डिस्कशन हुई तो उसके बाद काफ़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसमें मैंने गेन किया इनसे। तो उसके बाद काफ़ी पॉजिटिविटी है इस थिंग में भी, क्या होना चाहिए, किस तरह उनको इख्तियारात मिलने चाहिए, उनके हकूक़ उनको पूरे मिलने चाहिए। Every human being is gifted with certain talent. If their skill set is explored and polished properly, it can add great value to their personality formation, improve their socio-economic conditions, and contribute towards country's growth. The third chapter of the program focused upon women's skill development and creating business opportunities for them. Through 25 local resource persons, we established 5 Rozgar Shifakhana Skill Development Centers at 5 UCs, where 13 women were trained on stitching, sewing and embroidery as master trainers, who then trained further 125 local young women artisans at same Rozgar Shifa Centers. मैं रोज़गार शिफाखाना में जाके मैंने सिलाई सीखी। शौक़ एक था मतलब सीखने का, ये भी पूरा हो गया, और मेरी माँ बाप की थोड़ी मतलब सपोर्ट आ गई मेरी तरफ से। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं ये बनाती हूँ सूट, वो लोग लेते हैं, वो उसके पैसे मैं घर जाके मेरी मम्मी को देती हूँ, वो बहुत खुश होती हैं और मैं भी बहुत खुश होती हूँ। हाणे सिलाई सिखंदियूं न पोइ घर में वेंदियूं, पंहिंजे घर वेंदियूं त माना पंहिंजी बि इज़त थींदी, ऐं ॿियो वरी माना घर में को माना मसलो थिए त उन में भी इज़त थींदी, छो त हीउ मसलो हल करे सघे थी। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमारा जो बच्ची है वो कल माँ भी बनेगी, और वो अगर खुद पढ़ी लिखी होती है तो फिर उसके घर के एनवायरनमेंट में भी बहुत चेंज होता है, और आइंदा नस्ल के लिए बेहतर माएँ साबित हो सकती हैं। We basically believe when women are skilled, earnings and hold decision-making positions, quality of life will improve, not just for them and their families, but for communities and coming generations. The real conflict is between those who care and those who don't. The real success is making those who don't care reflect and care. ने इसको इतना स्ट्रेंथन कर दिया है इन लोगों को कि अब खुद जा रहे हैं, अपने हुकूक मांग रहे हैं मुख्तलिफ इदारों से। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। लड़का और लड़की को बराबर समझिए, दोनों खुदा की दीन है। हर इंसान को जीने का हक है, और वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह सांस लेता है, खाता पीता है, तो फिर उनके साथ ऐसा रवैया क्यों होना चाहिए? With support provided and skills developed by Norwegian Church Aid, we are certain that together we can change the narrative. Together we can make a difference. Together we can create an environment that is respectful and just.